Janvanti Model English School. Today we are going to start chapter number 3, subtractions. Okay student, in previous lecture you have done exercise 3.2 story sums and subtraction question number 3. Yes, today we are going to start subtraction of 4-digit number with borrow. Okay, exercise 3.3. So let's start exercise 3.3. Exercise 3.3. Page number 100. Okay. Question number 1. Subtract the following. Question number 1A. First of all, we will write place. 100, tens, ones. Okay, 6, 8, 5. 6, 8, 5. 2, 4, 9. Okay, students. Look at student. 5. Here is 5. Here is 9. Yes, student. So 5 is less than from 9. So we cannot subtract 9 from 5. Okay. So we cannot subtract 9 from 5. So what will we do, student? We will borrow from next column, that is 8. Tens place, that is 8. So 8 will become 7 and 5 will become 50. Yes, student. Now we will subtract. Okay. अब हम क्या कर सकते हैं? We can subtract. Now we can subtract 9 from 15. Okay. So 15 minus 9. 15 minus 9, 6. So we will write 6. Okay. Now 7 minus 4. 7 minus 4. 7 minus 4, 3. So we will write here 3. Next 6 minus 2. 6 minus 2, 4. So we will write 4 here. Okay. So we get answer 436. Okay. Now we will do next sums. B 100, tens and ones. 733. Next 507. Okay. You can see that, student. Here is 3, here is 7. Yes, 3 is less than 7. Okay, so we cannot subtract. We cannot subtract 7 from 3. Okay, what will we do, student? We will borrow from next column, that is tens. Okay, so 3 will become 2 and 3 will become 13. Okay, now we can subtract. अब क्या कर सकते हैं? हम subtract कर सकते हैं.
Okay, now we can subtract 7 from 13. Okay, so 13 minus 7, 13 minus 7, 6. So we will write here 6. And 2, 2 minus 0, so write additive digit 2. And 7 minus 5, so we will write 2. Okay, so what we will get answer? Answer we will get 226. Okay student, now we will do next sums. See, 100 tens ones, 586 and 258. स्टूडेंट रिमेंबर है, ऊपर नंबर छोटा है और नीचे बड़ा है, तो हम क्या नहीं कर सकते, नंबर को माइनस नहीं कर सकते। ओके, तब हमें ऐसी कंडीशन में, इस तरह के केस में हमको अपने बाकी वाले नंबर से बोरो करना होता है। ओके स्टूडेंट, so here is 6, here is 8, same situation again. Yes, 6 is less than 8, 6 is less than 8, so we cannot subtract 8 from 6. Okay, so we will borrow next column, that is 8. 8 will become 7 and 6 will become 16. Okay, now we will do subtract from 8 from 16. Okay, 16 minus 8, so we will write here 8. And 7 minus 5, 7 minus 5, 2. So we will write here 2. And 5 minus 2, we will get answer 3. Yes student, so we will write here 3. क्या लिखेंगे? 3. So our answer is 328. Okay. Next, six five zero 217. Yes. Here is 0, here is 7. Yes student, so we cannot subtract from 7 from 0. Okay, 7 from 0, so we will borrow from next column, that is tens. Okay, 5 will become 4 and 0 will become 10. Yes, 10 minus 7, what? 10 minus 7 is 3, so we will write 3. Next, 4 minus 1, 3. So we will write here 3. Next, 100 place, 6 minus 2, 4. So we will write 4. We get answer 433. Okay, note down student all these sums. Every day student.
Now we will move on next question. Question number 2. Subtract 4-digit number. Subtractions 4-digit number. अभी कितने डिजिट के किया था? 3 डिजिट. यस, सेम करने का वे वही है स्टूडेंट, बट ओनली हमारी डिजिट इंक्रीज हो जाती है. ओके, तो फर्स्ट look at here student, question number 2. A. First of all we will write place thousands. Thousand का short form TS. 100, tens, ones. Okay. Next 5262. 5262. Next 3366. 3366. Now we will do subtractions. Okay. Subtraction start from ones place. Okay. कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ones place से स्टार्ट करते हैं. Okay. So first same situation student again. Here is 2, here is 6. अभी मैंने बताया था ना कि छोटे नंबर से बड़ा नंबर क्या होगा? माइनस नहीं होगा. ओके, सो यहाँ क्या करना होगा? सबसे पहले हम बोरो करेंगे. ओके, तो अभी हमारा माइनस नहीं होगा, उल्टा तो हम कर नहीं सकते. 6 से 2 माइनस होगा. दिस इज रॉन्ग. ओके, सो फर्स्ट 2 इज क्या है हमारे को? लेस देन 6. तो व्हाट विल वी डू? क्या करें? तो वी विल बोरो फ्रॉम नेक्स्ट डिजिट दैट इज 6. 6 will become 5 and 2 will become 12. Yes student, now we will do subtraction. 6 from 12. Yes, अब हम subtraction कर सकते हैं. Can subtractions? Yes. Okay, so 12 minus 6 is 6. So we will write 6. Next 5 here. Same. 5 is small, less than 6. So then again we will borrow from next column, that is 100. कौन सा column है हमारा? 100. Yes. So 2 will become 1 and 5 will become 15. Yes student. So we can subtraction. हम क्या कर सकते हैं? Subtraction कर सकते हैं. 6 from 15. Okay. So 15 minus 6, 9. So we will write 9. Yes student. Next 1, here is 1, here is 3. Same situation again. Yes, यहाँ छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है. फिर क्या करेंगे? इस ऐसी कंडीशन में हम बाजू वाला जो नंबर है हमारा 5, इससे बोरो करेंगे. यस, तो 5 will become 4 and 1 इसको दिया, पैसे तो हम 10 दे, 1 दिया तो 11. क्या बन जाएगा यहाँ? 11. ओके, 11 3 सब्ट्रैक्शन करेंगे हम यहाँ पर. 3 फ्रॉम माइनस किससे करेंगे? 11 से. तो 11 minus 3 क्या होगा? 8. ओके, नेक्स्ट 4 minus 3 is 1. So we will write here 1. Our answer is 1896.
Okay, student. Let us go another sums. Question number 2B. First of all, we will write place. Tens, hundred, thousand, ones. 4372, 4372. Next 2960, 2960. Now we will do subtraction. We will start subtraction from ones place. Okay. 2. Here is 2, here is 0. तो we can subtraction हम कर सकते हैं. तो ऊपर नंबर कैसा है? बड़ा है, नीचे छोटा है. Yes. So 2 minus 0, write 2. 7 minus 6, we will write 1. And here is 3. Yes. And here is 9. 3 is less than 9. Yes. So what will we do? We will borrow from next column, that is 4 digit. Yes. 4 will become 3 and 3 will become 13. Yes, student. 30 minus 9. Yes. 30 minus 9. क्या होगा? What will be the answer? 30 minus 9, 4. So we will write 4. Okay. Next, 3 minus 2, 3 minus 2, 1. Okay. So our answer is 1412. Okay. Now let us see another sums. C. Tens, hundred, sorry, thousand, hundred, tens and ones. 3372, 3372 minus 777. Yes. Now we do subtractions. Yes. 2 is less than. किससे है हमारा? 7 से. So what will we do? We will borrow from next digit 7. 7 will become 6 and 2 will become 12. 12. Okay, student. कर सकते अब we can subtraction 7 from 12. Okay. 12 क्या आएगा? 12 minus 7. We get answer 12 minus 7. So it's 8, 9, 10, 11, 12. 5. We will write here 5. Next 6. Here is 6. Here is 7. 7 क्या है? छोटा नंबर है 7. 6 छोटा नंबर है 7 से. Yes. So we will borrow from next column, that is 3. जो कि 3 है. 3 will become 2 and 6 will become 16. 16 minus 7. इसमें 16 minus 7. 16 minus 7 क्या होगा? बताइए. 60 हमारे 7 है. 7 से 6 हुआ 16. 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9. Yes. So we will write here 9. Next 2. Yes, friend. 2 again less than 7. Yes. 2 क्या है? छोटा है 7 से. फिर क्या करेंगे? बोरो करेंगे नेक्स्ट कॉलम डिजिट से. So 3 will become 2 and 2 will become 12. 12 minus 7, 5. So we will write here
we will write here 12 minus 7, so we will write here 5. Yes student, and 2 minus 2, right, we will write as it is 2, क्योंकि यहाँ पर कोई नीचे डिजिट नहीं है. ओके, अब इसको हमें चेक करना है स्टूडेंट कि हमारा सब्ट्रैक्शन राइट है या रॉन्ग है. तो हम इन दोनों डिजिट का टोटल करते हैं, और अब इन दोनों टोटल करने के बाद जो हमें यहाँ का अंक जो है नंबर में ऑब्टेन होता है, तब हमारा आंसर क्या होता है, राइट है. दोनों को प्लस कर लेने पर 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 12, यस. 9 प्लस 7 16, यस. 7 प्लस 5 12, यस. एंड 2 8. यस स्टूडेंट, ये हमारा सब्ट्रैक्शन को चेक करने का मेथड है. दोनों को प्लस कर लेना और सेम जिससे हमने माइनस किया नंबर से उतना ही आंसर हमको मिलेगा. हमारा आंसर क्या है, माइनस, राइट है. ओके, नोट डाउन स्टूडेंट. D, E, F. Remaining question in your homework. Now we will go to the next questions. Question number 3. Question number 3. Student, remember that look out for the sign and solve the following addition and subtractions. Okay? आपको ध्यान से यहाँ साइन देखना है. ये मिक्स क्वेश्चंस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिए हुए हैं. ओके, तो फर्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग. Addition and subtractions. First, third, question number third A. Thousands, hundred, tens, ones. 8,283. 8,283. Next, 4,145. 4,145. Now we will do subtractions. Okay, we will start from ones place. Here is 3, here is 5. Yes student, 3 is less than 5. So we will borrow from next column, that is tens. 8 will become 7 and 3 will become 13. Okay, now we can subtractions. Yes, 5 from 13. Okay, 13 minus 5, 8. We will write 8. Yes student, next 8 plus 5. इन दोनों डिजिट को जब हम प्लस करते हैं तो हमको क्या गेट होता है, we will obtain 13 numbers. Okay, so 8 plus 5 13. It is correct. Okay, 7 minus 4 is 3. So we will write here 3. Next 2 minus 1, very simple, 1. 8 minus 4, we will write here 4. Okay, so we get answer 4,138. Now we will do next sums.
Student, look out. First sign, yes, here is plus sign. So we will do addition. हम इसको क्या करेंगे? दिस क्वेश्चन में हम एडिशन करेंगे. Thousands, hundred, tens, ones. Three, three, eight, two. 3, 3, 8, 2. And 1, 1, 1, 1, 7, 9. Now we do addition. Okay? Addition we will एडिशन हम करेंगे स्टार्ट कहाँ से? वंस प्लेस से. ओके, सो 2 + 9, 2 + 9 11. सो 11 पहले ही आपको समझाया था कि विथ कैरी सम्स. ओके, वी कैन नॉट राइट टू डिजिट इन फर्स्ट कॉलम वंस प्लेस. एक ही जगह पर दो डिजिट को लिखना पॉसिबल नहीं है. ओके, सो we will write here 1 and carry over 1 to the next column tens. Okay, now 8 जब हम इन दोनों डिजिट को ऐड करेंगे उसके साथ में कैरी 1 को भी हम ऐड करेंगे. ओके, so 8 + 7 15, 15 + 1 16. So we will write here 6 and carry over 1 to the next column 1. Okay, 3 + 1 4 + 1 5. So we will write 5. 3 + 1 4. So we will write 4. Okay, what will we get answer? 4561. Okay, now we will do next sum. See, thousand, hundred, tens, ones. 6,660. Next, 2,190. Now we will put symbol plus. और किसका symbol है? Plus का, addition का. Okay. Now we will start. 0 + 0 as it is 0. Yes, student. Then 6 + 9, 6 + 9 15. So we will write 5 here and carry over 1 to the next column. That is 100. 6 + 1 7, 7 + 1 8. So we will write 8. 6 + 2 8. So we will write here 8. So we get answer. हमें क्या मिला आंसर? 8850. Okay, student. Question number 3. Remaining questions D, E, F is your homework. Okay, now turn student. Have you written student? Okay, so exercise 3.3 is completed. I hope you have understood that exercise 3.3 subtraction of 4-digit number with borrow. Yes student, आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ. Okay, exercise. In next video we will do exercise 3.4 number story with subtraction. Okay, student, homework note down.
Today homework is exercise 3.3, question number 1, 2 and 3. Solve the sums. In your textbook and notebooks. Okay, question number 1, 2 and 3, subtractions. Okay, solve the sums in your textbook and notebook. Okay student, thank you, have a nice day, take care, we will meet in next video.